When I use words like domination, consistency, a sheer will to be the best of the best, I'm sure a few teams come to mind. There is, however, an entity out there, distinct and independent, who's been making waves ever since its conception. I am, of course, talking about TSM entity, arguably one of India's best teams. And with me in the studio today, I have the pleasure of having Ghatak, Clutch God, Z God, and Neo. Gentlemen, first of all, congratulations for making it to the biggest stage of PUBG Mobile, the World League. And Ghatak, let me start off with you. How are you feeling? I'm feeling great. मैंने यही सपना देखा था, यही सपना लेके आया था कि भाई इंडिया में वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है आने वाले टाइम में और वो ट्रॉफी लेके आनी है. तो पहली बार भी हमने मलेशिया में ट्राई किया था बट वहाँ पे नहीं हो पाया था, बट इस बार तो पक्का लेके आएंगे. Since you mentioned that, of course, you were there in Malaysia last year, and I do believe you ended up in the 5th position. So this time around, Ghatak, what are you going to do different? Just अभी लास्ट टाइम थोड़ा गन पावर का मतलब थोड़ा इशू था, बट अभी मैंने मेरी पूरी टीम रेडी करके रखी है. तो होपफुली सारे के सारे प्लान्स जो हमने किए वो वर्कआउट करेंगे फाइनल्स में, एंड बहुत अच्छे खासे लीड के साथ हम लोग जीतेंगे ये टूर्नामेंट. Well, that's what it's all about. That confidence and that experience is something that's going to help them out. Now, of course, I see Z God and Clutch God on my screens as well. First of all, gentlemen, I hope you are doing good. And Clutch God, let me ask you a question. Now, time and time out, I've always said that TSM entity is a team that thrives under pressure. In the midst of chaos is where you guys shine. I want to know one thing. When you are surrounded by the enemy at all sides and each one of your members is doing his own job, what is the communication like? उस वक्त ऐसा रहता है कि यहाँ पर बनने इनसे नॉक नहीं होना. We have to like shine bright in those hard moments there. So try ऐसा रहता है कि वो उनको मार पाए जितने स्क्वाड से अपने पास में लेफ्ट राइट जितने स्क्वाड से उनको मारने का ट्राई करते हैं. Well, that is what it's all about, clear-cut communication. And Z-God, if I may just add to that question. Now, when you are in the midst of all the action, and suppose you are looking in one direction dealing with the enemy, do you ever exchange your roles, or do you have to make sure that you get your job done and then you go on to the next one? टीम में सबका रोल फिक्स रहता है, मतलब जिसको जो असॉल्टर है वो पहले घुसेगा, ऐसा रहता है. लेकिन कभी कभार जल्दीबाजी में मतलब जैसे सामने नॉक दिया है तो फिर वो सब घुस जाते हैं क्योंकि अब मारना तो है, इसलिए फिर वो सब घुस जाते हैं. Now, Neo, let me come to you with a question. Now, of course, TSM entity is arguably one of the best teams to come out from the Indian gaming community. But that also means you have a lot of weight on your shoulders as far as expectations go. How do you balance out expectations from your fans and what you show us on the big screen? बेसिकली जब हम लोग खेलते तब हम लोग इतना सोचते नहीं है कि इतने एक्सपेक्टेशंस है फैंस के. तब हम सिर्फ हमारे लिए खेलते हैं, हमारे ड्रीम्स के लिए खेलते हैं कि हमें बस जीतना अपने लिए. अल्टीमेटली अगर हम लोग ही अच्छा खेलेंगे तो उनके एक्सपेक्टेशंस ऐसे ही कंप्लीट होने. Now, Ghatak, let me come to you for a question because I think this is something that the people want to know. Now, of course, TSM entity have been a dominating force in the world of PUBG. But like everyone else, we have our good times and we have our bad times. Now, when the boys are down in the slumps, so to say, how do you come along and get that morale up again? एक टाइम था, मतलब जब मैं वॉरबी में था, न्यू था, जब नया स्टार्ट किया था तब से एग्रेसिव खेलना स्टार्ट किया हमने. तो बहुत सारे बंदे आके मुझे बोलते थे कि तू थर्ड पार्टी कराता है, तू तेरे टीम को मरवाता है गलत कुछ करके. तो वही है कि मेरे टीम को वही था कि मुझे एग्रेसिव खिलाना है, कोई भी पड़ा हुआ जाए मतलब गेम का. और अगर मेरे प्लेयर्स का कभी मतलब कुछ मतलब ऐसा डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर कुछ थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन रहता है तो रात को थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और उनको मैं बताता हूँ कि तुझे क्या करना है, तेरी क्या गलतियां है, और बस ट्राई करता हूँ कि उनको जितना ज्यादा मोटिवेट कर सकूं उतना ज्यादा मोटिवेट करूं. Now, Clutch God, let me come back to you with a question. Now, we all know that Angle is one of your stronger maps, and earlier on you used to drop down in Yasnaya. However, recently you guys have started preferring the city next to West George Paul. Any specific reason for this change? Yasnaya for loot बहुत बड़ा सिटी and वहाँ पर vehicle spawns
मतलब रैंडम में रहती है और सिटी में इट्स लाइक 2 गैरेज है एंड बहुत सारे व्हीकल्स पहुंचते हैं तो लूट भी इजली हो जाती है वहाँ पर और व्हीकल से मिल जाती है सो इजी रोटेशन. Karthik, I think the community and I want to know one thing. Now, you have a lot of pressure because, you are the guy who is taking charge right now. But is there some mantra in life that you follow just to help you along? मंत्रा तो नहीं बोल सकते बट हाँ सपना देखा है, बस वही सपना फॉलो कर रहे हैं. बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें कही थी पहले इंडियन टीम्स के लिए बट उनको अभी दिखाने का टाइम है कि भाई इंडियन टीम्स क्या कर सकती है और उनको 100% दिखा के रहेंगे हम लोग. Well, there you have it. TSM Entity is ready to show the world what India is made of. Gentlemen, once again, thank you so much for being here in the studio. Thank you so much, Exi. Thank you so much. Thank you.